नमस्कार दोस्तों, एपी के बंदी के एक और एपिसोड में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी आने वाली और भी वीडियो आप तक लगातार पहुंचती रहे। और अब बात करते हैं आज की वीडियो की, तो आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एक और नए गेम की। वैसे अनबॉक्सिंग काफ़ी टाइम बाद आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। दरअसल अभी मेरे पेपर चल रहे थे, उसके लिए मैं कुछ बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि लगातार वीडियो चलती रहे। तो ये जो पैकिंग है ये अमेज़ोन से आई है अभी भी, और ये मैंने गेम ऑर्डर किया था कम से कम 2 या 3 दिन पहले, तो ये आज हमारे पास पहुंच चुका है। तो इसे करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है गेम। और गेम की बात करूं तो इसके अंदर है ड्यूस एक्स। थोड़ा सा पुराना गेम है लेकिन काफ़ी बढ़िया गेम है। और आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सिंपल सी पैकिंग है इसकी। इसके ऊपर आप देख सकते हो, इसको कुछ एड्रेस ही दिया गया, वैसे तो और कुछ नहीं है इसके ऊपर। गेम की डिटेल वैसे प्राइसिंग होगी वैसे इसके ऊपर। तो इसको करते हैं ओपन। तो इधर से खुलेगा ये देखिए, इधर से ओपन तो हो गया है वैसे। साइड में और खोल के देखते हैं अंदर की कैसा गेम है और कैसी पैकिंग देगी इसकी। तो पैकिंग तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है वैसे। तो गेम तो अंदर बिल्कुल सेफ है। और ये देखिए गेम, इसका नाम ऊपर लिखा हुआ इधर, आप इधर से पढ़ सकते हैं। 1 मिनट, ये देखिए ड्यूस एक्स मैनकाइंड डिवाइडेड। तो ऐसी कुछ ब्रांडिंग है इसको। तो इसको इधर से निकालते सिंपली। ओ ये देखिए, और आपको पैकिंग में तो और कुछ नहीं मिलता। जो ऊपर इसके कार्डबोर्ड की होती है सेफ्टी के लिए, तो इसको रखते हैं साइड में। और ऊपर आपको गेम के ऊपर एक बिल मिलता है, इसके ऊपर इसकी डिटेल दी गई है और अमेज़ोन की ब्रांडिंग है। और इधर इसकी प्राइसिंग है, आप प्राइसिंग देख सकते हैं मेरे को कितने में पड़ी है, ये देखिए। तो ये बिल है, इसको भी रखते हैं साइड में। और जो हमारा गेम है उसकी तरफ देखते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सिंपल सी और सुंदर पैकिंग है काफ़ी, ये देखिए। और ड्यूस एक्स की ब्रांडिंग है, ऊपर पीसी डीवीडी लिखा गया है। और बात करते हैं और कुछ, और बैक साइड की बात करते हैं तो इसके पीछे थोड़ी बहुत फोटोग्राफ दी गई गेम की, दिखाया गया इसके ग्राफिक्स और रिक्वायरमेंट दी गई नीचे, आप पढ़ सकते हो इधर किस किस पीसी में चल सकती है। और नीचे शायद कोड है इसका, वैसे देख ही लो कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोड है आई थिंक स्टीम से अपने को ये ओपन करना पड़ेगा, स्टीम का है तो ये शायद। तो खोलते हैं इसको। ये ऊपर इसकी बिल्कुल सही पैकिंग ऊपर, ये देखिए बिल्कुल सील है। तो इधर से अपने को इसको हटाना पड़ेगा। ये देखिए, जो ऊपर की पॉलिथीन थी ये तो हटा दी हमने। ये कोड को संभाल के रखना पड़ेगा, नहीं तो कोड जो है नहीं तो गेम प्ले नहीं होगी हमारी। और अगर आपको गेम परचेज करनी हो तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप डायरेक्ट जाके उधर से परचेज कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये देखिए, इसको रखते साइड में। और ये है कोड इसका, इसको रखते एक साइड और बढ़ते गेम की तरफ। तो ये देखिए ऊपर की पॉलिथीन थी जो वो तो हटा दीजिए। और खोलते इसको गेम को सिंपल ऊपर से। बाकी पैकिंग तो काफ़ी बढ़िया है। और इसके बाद एक और वीडियो आने वाली है जल्दी, क्योंकि जो मेरे कीबोर्ड और माउस है वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनको जल्दी में चेंज करने वाला हूँ। तो उसकी वीडियो आप तक लगातार और जल्दी ही पहुँच जाएगी, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। और इसके अंदर दोबारा हमको एक कार्डबोर्ड मिलता है, ये देखिए। कुछ खास पैकिंग नहीं है, अंदर आपको कार्डबोर्ड ही मिलता है, ये देखिए। ये बिल्कुल खाली अंदर से, कुछ पेपर वर्क आई थिंक अंदर मिलेगा, तो इसको एक बार साइड में रखते हैं। और ये देखिए एक सिंपल सा कार्डबोर्ड मिलता है आपको,
बिल्कुल। तो इसको खोलते हैं हम, तो बिल्कुल ही सिंपल पैकिंग है इसकी, बिल्कुल ही सिंपल। ऊपर कुछ पेपर वर्क है, ये देखिए, ये सिंपल सा पेपर वर्क है, थोड़ा बहुत है कागज़ का बिल्कुल, और नीचे इसका कोड है स्टीम का। तो और तो आपको कुछ इसके अंदर 2 डीवीडी मिलती है आपको, ये देखिए, आई थिंक 2 ही है। तो ये देखिए, ये डीवीडी मिलती है आपको, इसको खोल के देखते हैं। तो 3 डीवीडी है, एक मिनट, 3, हाँ आपको अंदर 3 डीवीडी मिलती है, इसके अंदर 2 है। ये देखिए, एक इस साइड और एक इस साइड है। आई थिंक ये नंबर 2 डिस्क है, और एक नंबर 1 है, और नंबर 3 इधर है। तो क्या पता है गेम का साइज तो कितना है, लेकिन 3 डीवीडी मिलती है आपको। तो ये सिंपल 3 डीवीडी है आपके अंदर। तो इनको डालते हैं अपने पीसी में और देखते कैसा है गेम और कैसा प्ले करेगा। तो चलते हैं हमारे पीसी की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए अपने लैपटॉप की ओर, जो हमारी डीवीडी थी उसको डाल लेते हैं हम अपने लैपटॉप में और चला के देखते हैं गेम को। तो करते इसको इंस्टॉल। ये देखिए, इसने प्रोडक्ट की मांग ली और इधर हम अपनी प्रोडक्ट की है जो उसको डाल देते हैं। ये अपने को इसमें गेम में मिल गई प्रोडक्ट की इसकी, तो इसको डाल लेते हैं हम। ये देखिए, तो ये जो प्रोडक्ट की इसको डाल लेते हैं। तो ये है, और ये जो प्रोडक्ट की इसको हमने इसमें डाल दिया है, और अभी करते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए, जो हमारी एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, और अब करते हैं इसको नेक्स्ट। तो ये गेम होनी अपने आप ही इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, आई एग्री। तो ये गेम होनी स्टार्ट हो चुकी है। The year was 2027. Advances in biotechnology were helping people improve their physical and mental abilities to an amazing degree. Provided, of course, they had enough money. A new breed of people was emerging, half human, half machine. And in Detroit, at least, not everyone was happy to see it. I'd just landed a job as head of security at Sarif Industries, a cutting-edge biotech firm. David Sarif himself handpicked me for the job, said he needed me to keep his people safe. My ex, Megan Reed, was one of them. Brilliant neuroscientist, Megan had found a way to make augmentation safe and affordable for everyone. All she had to do was present her research to Congress. But the night before her big meeting, my security measures failed. A
team of Black Op mercenaries stormed into Sarif headquarters, massacring everyone in sight. 3 of the mercs were heavily augmented walking tanks. Their mission? Take out Megan and her team. I tried to stop them, but their leader tossed me through a plate glass wall. Last thing I heard as his bullets slammed into my brain was Megan's dying scream. I should have died with her. Only I didn't. High-end military-grade enhancements saved my life. The best augmentation Sarif's money could buy. It took me half a year to get a feel for her. Should have taken longer. But 6 months into my recovery, Sarif Industries was attacked again. This time, by a radical group of pro-human purists. Violent, militant, and fanatically opposed to human augmentation. They claimed to be members of Humanity Front, a non-profit organization that wanted the UN to limit biotechnology research. The thugs broke into Sarif's factory and found machinists working overtime on a top-secret military augment called the Typhoon. Sarif sent me to retrieve it, and when I did, I found one of the so-called purists next to it, wired with cerebral implants, trying to download its classified specs. Obviously, something more was going on. The Aug killed himself before I could question him. Sarif ordered me to dig deeper, so with the help of Frank Pritchard, Sarif's head of cybersecurity, I did. Turns out a second hacker had been controlling the Aug's actions from somewhere off-site. Pritchard and I tracked his signal to a secret FEMA internment camp in Detroit. The Black Op mercenaries were there. The same mercs who'd left me for dead 6 months before. Figured they'd try again when they saw me. It wasn't so easy for them this time. I took out the tank named Barrett, even got him to give me a new lead. A penthouse apartment in China. Of course, we both knew it would be a trap in the end. Hengsha Island, China. Home to a city so crowded, they had to build a second city on top of it. Trying to find clues in Hengsha wouldn't be easy. Lucky for me, I wasn't alone. Farida Malik, Sarif Industries' ace pilot, had lived in Hengsha before. A good person to have on your side. She knew enough about the place to get me around. Malik dropped me in the lower city, close to the penthouse Barrett had told me about. Bell Tower Associates, a private security firm under contract to the Chinese government, had agents tossing the suite when I arrived. Just not for the reason I'd been expecting. Turns out the man who lived there was a criminal hacker named Van Bruggen. The same hacker who'd been remotely controlling the Aug in Sarif's factory. Van Bruggen's panicked decision to force the man to commit suicide had been a mistake. Now his mercenary partners were gunning for him, and I needed to find him before they did. Locating Van Bruggen meant playing nice with the Triads, Hengsha's organized crime lords. They had the hacker holed up inside a low-rent capsule hotel. By the time I found him, Van Bruggen had no qualms giving up the woman who hired him. Zhao Yunru, president of the Taiyang Medical Corporation. According to Van Bruggen, Zhao wanted to monopolize the augmentation industry and had hired Black Op mercenaries to destabilize her competition. Sarif Industries was at the top of her list. To prove this, I needed to get inside TYM and grab a surveillance hologram off a server. I suspected Van Bruggen was hiding something when he told me this, but nothing could have prepared me for what I saw. Megan wasn't dead. She and her 4 best researchers had been kidnapped, spirited away somewhere while their kidnappers made it look like they were dead. Desperate to learn more, I confronted Zhao in her penthouse. She claimed to be a pawn in a bigger plan, and hinted at a group so powerful it controlled global interests at a whim. Then she slipped into a panic room and hit the alarm, forcing me to make a very quick. I once thought I could save the world.
In yet another augmented terror attack, 251 passengers aboard Sista Airlines Flight 451 were killed when an augmented passenger broke into the plane's cockpit and ruthlessly butchered its flight crew. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the AUG incident. That horrible day 2 years ago when augmented people all over the world flew into a psychotic killing spree, causing the greatest loss of life in recent history. Sometimes you just have to let go and embrace what you've become. Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are ya? Well, if I do, McCready, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen! Am I gonna have a problem with you? No, sir. No reason to assume you would. Good, because you are the only augmented operative on this team, and I intend to make good use of you. Listen up, all of you. We got a sandstorm barreling down our arse and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, an arms dealer named Shepard. He's ex-Bell Tower, one of the Special Forces commanders who disappeared during the incident. And he's come out of hiding? That cannot be good. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Aran Singh, the undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's got. For 3 years he's worked hard to get him tight with the Jinn, an Iraqi smuggling cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the Jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. They told Singh to handle the buy. They're not gonna like it when Interpol disrupts that party. Is Singh's cover really that good? It is right now. We need to keep it that way. This is where the deal's going down. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. It's not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the labourers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit, and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. So what's the plan, Director? Singh's meeting Shepard on the ground floor, inside the hotel's main atrium. He sent the bulk of his Jinn crew to the penthouse levels to secure a vantage point. I'm not leaving my 6 exposed. Give me something lethal. Your call, but Singh's undercover in all this. So watch your fucking sights. What about range? There's lots of wide spaces and high ceilings in there, but a number of tight and constrained rooms too. So it's a crapshoot, really. Well, I'm not looking to play dice with anyone in there. Give me something with distance. Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way. One last thing, Jensen. Singh said the Jinn are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable it. I'll keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in. There is, and we got the intel on this mission at the very last minute, so we're scrambling a little. If it comes to it, your number one priority. Copy that. You're up first, Jensen. Let's do this. Task Force Actual. This is Knife Leader. Engage Hush drives and descend to Angels 1-5.
Team leader, this is Jensen. I'm on the roof. Solid copy. Move into the building. The access route you need to block is at the far end of the penthouses. And keep in mind, the direct route might not be the easiest one.